नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। अली बुखारी और कानून और आप दोनों आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज 16 मई 2016 को अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। पहले अपनी छोटी सी अनाउंसमेंट के साथ। अनाउंसमेंट्स हमारी जो वीकली होती हैं कि अपॉइंटमेंट्स कहाँ पर होंगी। इस हफ्ता सारा हफ्ता मैं लंदन में इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट्स कर रहा हूँ। पहले प्रोग्राम था बर्मिंघम जाने का, लेकिन कुछ काम ज़्यादा जमा हुआ है, तो इस दफ़ा का बर्मिंघम का प्रोग्राम मैं कैंसिल कर रहा हूँ इस हफ्ते का। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मैनचेस्टर होगा और उसके अगले हफ्ते फिर मैं बर्मिंघम जाऊँगा। अगर आप बर्मिंघम में हैं और आप मिलना चाहते थे और आप इंतज़ार कर रहे थे कि इस हफ्ते मुलाकात होगी, प्लीज़ मुझसे फ़ोन पे या स्काइप पे बात कर लीजिएगा। उसके ऊपर भी हम कंसल्टेशंस कर लेते हैं, तो वहाँ पे कोई मसला नहीं होगा और आपको वही एडवाइस दे सकता हूँ जो कि मैं इन पर्सन बैठ के दूंगा आपको। एनीवे, अब अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम की तरफ जाऊँ, बहुत सारे सवाल अभी भी मुझे आ रहे हैं पीडी एंड अदर्स के बारे में। पीडी एंड अदर्स 7 साल वाला बच्चों का केस, मैं हर हफ्ते ही मेरा ख्याल है इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ ऐसी है कि उसके ऊपर जितना भी बात करें वो अच्छा ही है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ ना कुछ मुस्बत नताइज निकल सकते हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। कोर्ट्स की तरफ से इसको देखा जा रहा है। दूसरी चीज़ एक और जो बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, अभी भी उसके ऊपर चल रहे हैं, वो टॉइक वाले एग्ज़ाम्स के, टॉइक वाले जो केसेस थे उनके ऊपर आ रहे हैं। होम ऑफिस की तरफ से अभी उसमें कोई चेंज खास नज़र नहीं आ रही कि वो अपना एटीट्यूड को चेंज करें, कि जो अब डिसीजन कोर्ट का आया है, जो हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जी टॉइक वाले जो केसेस थे वो उसके ऊपर फैसला गलत किया गया था और उनको गलत रिफ्यूज़ किया गया था। अभी तक होम ऑफिस की तरफ से कोई नरमी नहीं नज़र आ रही, क्योंकि मैंने देखा है अभी एक और रिफ्यूज़ल अभी नया ही आया है, बल्कि आई थिंक अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट वीक का रिफ्यूज़ल है। उसके अंदर क्लाइंट को यही कहा गया कि जी आपकी वैलिड लीव इसलिए नहीं चल रही क्योंकि आपको तो हमने टॉइक की वजह से रिफ्यूज़ कर दिया था। भाई, अगर टॉइक वाला सारा कुछ कलअदम करार दे दिया गया है, वो गलत था, उसको कैंसिल कर दिया गया, और जो जिस एविडेंस के ऊपर उनको आप रिफ्यूज़ कर रहे थे उस एविडेंस को हियरसे करार दे के बिल्कुल वर्थलेस और बिल्कुल बेईमानी करार दे दिया गया, तो उसका मतलब आपका डिसीजन गलत है। अगर आपका डिसीजन गलत है तो आप ये तो नहीं कह सकते कि बंदे के पास काम की इजाज़त नहीं है या उसके पास टाइम नहीं होना चाहिए। ये तो बिल्कुल सरासर ज़्यादती वाली बात बनती है। लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि जिसको चैलेंज करने के लिए आपको फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा। जब तक होम ऑफिस इसको कोई ना कोई और वैल्यू नहीं देता, हमें इसको उसी तरह से देखना पड़ेगा। सो अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, जिस सिचुएशन के अंदर खड़े हैं, वहाँ पे टॉइक वाले केसेस के अंदर मुझे अभी होम ऑफिस की तरफ से कोई बहुत बड़ी चेंज नज़र नहीं आ रही। हालांकि एक डिसीजन हाई कोर्ट का मौजूद है जो कहता है कि होम ऑफिस ने सारे फैसले गलत किए। सो कब फैसला होगा, वो कब इसके ऊपर कुछ चेंज करेंगे, क्या वो इसको चैलेंज करते हैं और उस चैलेंज का इंतज़ार करते हैं, वो हमें देखना है अभी। और अभी उसके ऊपर कोई अपडेट जैसे आएगा मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे बताया जा रहा है काफ़ी कॉलर्स ऑनलाइन वेट कर रहे हैं। अगर आज प्रोग्राम अपना टाइम पे शुरू कर ही लिया है तो ज़्यादा फ़ोन कॉल्स भी लेते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Assalamu alaikum. My name is Ali Raza Bukhari. Thank you very much for your time. Thank you. You're most welcome. आपका शो बहुत अच्छा है. I must say कि जो आप काम कर रहे हैं ये सबका जारी है. बहुत लोगों का हेल्प होता होगा. Thank you. Definitely. मैंने भी एक तरह से सवाल के लिए फोन किया है. I came into the UK in 2008, and then I was on a student visa first actually. Then I got married in 2013 with a French national. मेरी wife, mashallah, she converted to Islam and she's a Muslim now. I mean, obviously, she's French and I'm from Pakistan. So I got like a 5-year European residence permit, you know, because of her French nationality. But now, a year and a half ago, she got actually a British passport now. What she thinks now, like I've been in the country already for 8 years, you know, and then what she thinks that obviously I am also eligible to get the British passport, you know, and this is what confuses us, like that. Well, how can I apply for the naturalization? I mean, if I'm eligible, and is it the right time? Obviously, she's British now, and if you go to look at the Home Office website, they say if your partner is British, your wife is British, you can apply after obviously 3 years. But when I got married, she was actually a French national, and that's why I got like residence permit for 5 years. So मुझे इस बारे में कुछ पूछना था. The reason why I'm asking question in English is actually that she hardly speaks Urdu, and she got like broken Urdu obviously. So वो उसको so she can understand as well and she can listen as well what I'm asking. I will give you an answer in English first, and then I'll translate it in Urdu for everybody else to listen. It's a very good question for the simple reason that it will clarify a lot of the law
and clarify a lot of the confusions in the area. Let me explain something to you first. What you've done, well, congratulations for your marriage and congratulations for everything that has happened. And the main thing that you need to understand is, as far as the immigration status goes, your immigration status was based on your marriage to a European national exercising treaty rights in the UK. When that person ceases to be a European national and becomes a British national, things change. Now, you cannot say that because she's a British national, I will be allowed to just go for naturalization after 3 years. For you to be allowed to go to naturalization after 3 years, you must have had a spouse visa under the immigration rules with that with the wife. You haven't had that. What you have had is a sponsorship in an EEA relationship, and that sponsorship no longer applies because she's no longer an EEA national. So, Ali Raza, I'm so sorry, but looks like you've done something without knowing about it. You've added a few years to your indefinite leave status. I'll tell you why. Now what you've done is, you went in with the European regulations. Now that, as I understand, you said 2013 was when you got married. Now from 2013 till 2018 would have been 5 years. Now if your wife was still a French national and you had been together for 5 years, you would have been automatically allowed to go for a permanent residence. And another year after that, and you would have been allowed to apply for naturalization. Now, it is debatable whether if after 5 years you could have been able to apply for naturalization if she had become a British national at that time. That could have been a scenario as well. But the problem now is that you went with the European regulations, you got your status on that basis, and then the European national that your status was dependent on ceases to be a European national and becomes a British national living in the UK. So now the immigration rules will be applicable to you. And the problem with your matter is now that you are under the European regulations. So now if you go on to the spouse visa, she has to show that she has an employment, or you both together have an income, a combined income of over 18,600, that you can apply under the immigration rules. You will be granted a 2.5-year visa for a spouse visa, and then you'll have to apply for an extension after that 2.5 years. And after 5 years, you'll be able to apply for indefinite leave. And once you've got indefinite leave, then yes, if you are still married to your wife and everything's still going well, you can maybe apply straight away for naturalization without waiting for an additional year, because this is on the basis of a marriage to a British national. But the problem is you're mixing up a lot of things together. You're looking at only the naturalization. You're forgetting that you need to apply for indefinite leave first. And you can only apply for indefinite leave when you're married to a British national once you've had the spouse visa. You haven't had the spouse visa. So if you had spoken to me before she had applied for the British naturalization and to become a British national, I would have said, do not do it yet. I would have said, wait till you've completed your 5 years, till you've got your permanent residence. Then she could have gone on and become a British national, and you could have been able to apply for, you would have been able to apply for a naturalization on that basis. I'm so sorry, I'm not giving you anything further on this or anything, any good news on this, but from what you've told me and from what I've understood, this seems to be the situation. I'm going to switch to Urdu now. अब मैं उर्दू में बताता चलूँ उनका सवाल क्या था जी. सवाल ये कि ये यहाँ पर आए, स्टूडेंट आए, उसके बाद 2013 में इनकी शादी हो गई फ्रेंच नेशनल के साथ, और वो इनको शादी की बेस पे इनको 5 साल का वीज़ा मिल गया यहाँ पर. अब वो उनको यूरोपियन रेगुलेशंस के तहत मिला. अब ये हुआ कि पिछले साल इनकी वाइफ ने ट्रांसफ़र कर ली अपनी नेशनैलिटी एक तरह से, और उन्होंने फ्रेंच सिटीजनशिप की बजाय अब ब्रिटिश नेशनैलिटी अपना ली. अब ब्रिटिश नेशनैलिटी अप्लाने का मतलब ये हुआ कि अब उनके पास यूरोपियन नेशनैलिटी नहीं है, सो अब वो यूरोपियन रेगुलेशंस में भी नहीं आते. अब इनका सवाल ये था कि जी मैं नेचुरलाइजेशन के लिए कब अप्लाई कर सकता हूँ, और मेरा जवाब इनको ये है कि आप क्योंकि यूरोपियन रेगुलेशंस के अंदर अपना चला रहे थे, और उसमें जब तक आप 5 साल कंप्लीट नहीं करते आपको परमानेंट रेजिडेंस नहीं मिलती. सो यूरोपियन रेगुलेशंस के अंदर आपको परमानेंट रेजिडेंस नहीं मिल सकती. अब अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको जाके इमिग्रेशन रूल्स के तहत ऑन द बेसिस ऑफ अ मैरिज टू अ ब्रिटिश नेशनल आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 18,600 की इनकम की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज की इनकम रिक्वायरमेंट पूरी करनी है.
इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, और उसके बाद जाके आपको स्पाउस वीज़ा मिलेगा, वो भी 2.5 साल का। उसके बाद एक और 2.5 साल का स्पाउस वीज़ा मिलेगा, और 5 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंडेफिनिट लीव, जिसके बाद आप नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ये काफ़ी कुछ बीच में एक खिचड़ी सी बन गई है, क्योंकि इन्होंने शायद रूल्स को समझा नहीं, इनको पता नहीं था कि किस तरह से करना है। लेकिन मेरे नज़दीक ये, अगर मैं सही समझा हूं तो दिस इज़ द सिचुएशन। तो मुझे इसमें लगता है कि अब आपको इमिग्रेशन रूल्स के अंदर अप्लाई करना होगा, और आपको 2.5 साल का स्पाउस वीज़ा मिलेगा, जिसके बाद आप 2.5 साल और गुजारने के बाद 5 साल की बेस पे, जब आपके 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी सूरत में एक और चीज़ ये भी है कि 2008 से आप यहाँ पर आए हुए हैं, 2008 से आप रेगुलरली लीगल चलते आ रहे हैं, तो फिर आप अभी स्पाउस वीज़ा अप्लाई करें। अभी आप 2016 के दरमियान में आ चुके हुए हैं। अगर आप अभी स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं, जब आपको स्पाउस वीज़ा मिल जाता है और आपको 2.5 साल की लीव मिलती है, तो बाय द टाइम आपके 2.5 साल कंप्लीट होंगे, तो हो सकता है आप 2018 के उस टाइम पे पहुंच चुके हों जब आपके 10 साल लीगली कंप्लीट हो जाते हैं। आप उसकी बेसिस पे भी नेचुरलाइजेशन के उसके लिए, इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Again, it's a complicated thing. If you don't understand it, please do come and see me, or do go and see another lawyer who can advise you properly on this. But please, please, please take steps properly when you know what is happening and what the law is. Because right now, I think you've just been unaware of what the law is, and you've got yourself into a little bit of a pickle. I hope you get out of it on the right side. Alright जी, नाज़रीन, अब ब्रेक का टाइम हो रहा है, हम ब्रेक से वापस आते हैं, अगला सवाल फिर लेते हैं, थोड़ी सी देर में दोबारा मिलते हैं।